हेलो एवरीवन, आई होप आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। एग्जाम आने ही वाला है। मैं आपको करवा रही हूँ कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। पिछले वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे उसी सीरीज को। लेट अस प्रोसीड टू आवर वीडियो नंबर 2। ये कुछ वीडियोस हैं हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के, जो कि आपको काफी काम आएंगे एग्जाम्स में। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ से जरूर शुरुआत करिएगा अपनी पढ़ाई की। 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन 11 से शुरुआत करते हैं। टिंटन एबे रिफ्लेक्ट्स पेंथिज्म, assertion and reason. Nature is presented as a spiritual presence. So option A here is right. William Wordsworth treats nature as divine force. Pantheism is the philosophical and religious belief that God and universe are identical. एक ही हैं, equating reality with divinity. तो उनकी पोएट्रीज में नेचर नजर आता था और नेचर अपने आप में एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस की तरह होता था, और टिंटन एबे में भी हमें यही नजर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चर एंड एनार्की क्या क्रिटिक करता है? इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, डिक्लाइन ड्यू टू मटेरियलिज्म, रिलीजियस करप्शन और रोमांटिक इमेजिनेशन। कल्चर एंड एनार्की 1869 का वर्क है बाय मैथ्यू आर्नल्ड, एंड आर्नल्ड strongly critiques the Victorian era's obsession with material success, wealth, and machinery, which he argues leads to decline in true culture. He terms this materialistic focus the Philistinism. Philistinism की बात की थी उन्होंने, Philistinism of the middle class, which values machinery and industrial gain over sweetness and light, that is beauty and intelligence. तो ब्यूटी इंटेलिजेंस के ऊपर प्रेफर किया जाता है मटेरियलिज्म को. दैट इज व्हाट ही क्रिटिसाइज्ड. Which of the following best characterizes modern literature? Linear narrative and moral clarity, emphasis on realism and objectivity, fragmentation and stream of consciousness, strict adherence to classical unities. Fragmentation and stream of consciousness. Modernist writers like Virginia Woolf and James Joyce used fragmented narrative and stream of consciousness. Option C here is the right answer. Assertion reasoning का ही क्वेश्चन है नेक्स्ट. Assertion, stream of consciousness attempts to represent continuous mental flow and reason. It reflects unconscious psychological processes. Option A is right. Both true and are explains. Modernist writers were influenced by psychology, स्पेसिफिकली सिगमंड फ्रॉइड की बात करें तो, और वर्जीनिया वुल्फ की और जेम्स जॉयस की. तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में कुछ चलता रहता है, लेकिन अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्निस्ट फीचर? फ्रेगमेंटेशन, मिथिकल मेथड, क्लियर मॉरल क्लोजर, साइकोलॉजिकल डेप्थ. मॉडर्निस्ट लिटरेचर roughly we can say 1900 से 1940s तक का is defined by the rejection of traditional Victorian era or realistic conventions, which often provided clear moral lesson or endings. Instead, modernists focused on fragmentation, on mythical method, on psychological depths. फ्रेगमेंटेशन, जहां पर हमें ब्रोकन और केओटिक वर्ल्ड नजर आता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर का. मिथिकल मेथड की हम एंशिएंट मिथ्स को यूज कर रहे हैं टू स्ट्रक्चर मॉडर्न केओटिक एक्सपीरियंस, जिसको कि टीएस एलियट ने बहुत ही फेमसली डिफाइन किया है. साइकोलॉजिकल डेप्थ, जहां हम एक्सप्लोर करें इनर कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस को बाय यूजिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक्स, लेकिन मॉरल क्लोजर नहीं होता. Next question, who proposed the distinction between Lang and parole? And the right answer is Ferdinand de Saussure. He distinguished Lang as language system and speech as parole. Next question, assertion reasoning का Lang is abstract and it represents individual speech acts. अगर abstract है तो individual speech act को represent नहीं कर सकती है. Lang is the abstract system, the system of the language, but parole is the individual speech. Next question, phoneme refers to written symbol, smallest unit of meaning, smallest unit of sound. Distinguishing meaning, sentence unit. A phoneme refers to smallest unit of sound that distinguishes meaning in a language. Phonemes are individual speech sounds, consonant or vowels, whatever,
When combined, make up words and changing a single phoneme can change the meaning of a word, right? For example, if we change bat, only one phoneme we change, bat, it changes the whole meaning. Question number 20, आज का last question. Morpheme is the smallest meaningful unit and phoneme carries meaning independently. Morpheme is the smallest meaningful unit, लेकिन phoneme sound है, meaning carry नहीं करता. तो ऑप्शन सी here is the right answer. हर सवाल आपको आपके पीएचडी के सपने के करीब ला रहा है और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा. आज के 10 सवाल खत्म हुए, लेकिन आपकी मेहनत की कहानी अभी शुरू हुई है. ये सिर्फ पार्ट 1 था. आगे और भी टफ सवाल आपका वेट कर रहे हैं. रुकिए मत, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट आपको आपकी प्रिपरेशन के नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा.